start our program, so please have a seat. हमारे आज का प्रोग्राम दो हिस्सों में होगा, जहां मुझे इंग्लिश बोलनी होगी। डॉक्टर दुरेशेवार जो हैं हमारी दोस्त, हमारी डायरेक्टर की हैं अमेरिकन काउंसिल ऑफ माइनॉरिटी वुमेन की, वो आपको साथ साथ उर्दू में भी बताती जाएंगी। तो आज की तकरीब का आगाज़ हम अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू करेंगे। मैं बुशरा फरहान को दावत दूंगी कि प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ और तिलावत से हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Good evening. Assalamu alaikum. On behalf of the American Council of Minority Women, first of all, I wish to extend my heart thanks for your presence at this seminar. Assalamu alaikum. On the behalf of American Council of Minority Women, खुश आमदीद। मैं आप सबको अपने आज के सेमिनार में खुश आमदीद कहती हूँ। I know that you are very busy in your professional lives, and I appreciate that you have realized the importance to educate our women regarding their health issues as we observe Breast Cancer Awareness Month. मुझे मालूम है कि आप सब बहुत मसरूफ़ हैं और अपनी मसरूफिया से, घरेलू मसरूफिया से, जॉब से आ रहे हैं अपना टाइम निकाल के। बहुत शुक्रिया। हमारा जो अक्टूबर का महीना होता है ये ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस का होता है, इसके बारे में मालूमात फराहम करने का महीना होता है। तो आज हम इसी सिलसिले में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। I know that just like me you are also a believer of primary prevention of disease. मुझे मालूम है कि जैसे मेरा बिलीव है कि हम लोग बीमारी को पहले से ही पकड़ लें बजाय कि वो जड़ पकड़ जाए। If you can detect a malignant disease at its earlier stage, it is easy to manage and cure with a good and positive outcome. अगर आप कोई ऐसी बीमारी, मूजी बीमारी जो जिस्म में फैलती है, और ज़्यादा मेरा ख्याल है मूजी ही लफ्ज़ बेहतर होगा, यहाँ पे काफ़ी सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं, तो उसको अगर हम पहले से ही पकड़ लें और उसका इलाज शुरू कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। Today we are here to learn about early sign and symptom of breast cancer. Our elegant guests and speakers, doctors, they will let us all about the breast cancer. आज हमारे साथ हमारे डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो कि ब्रेस्ट सर्जरी और ब्रेस्ट रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं और वो आपको बताएंगे कि ब्रेस्ट कैंसर की अलामात क्या होती हैं और उसको हम कैसे पकड़ सकते हैं शुरू में ही। और वो हमें when to seek help and where to go if God forbid you will something which is not usual and which shouldn't be there. और वो हमें ये बताएंगे कि इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि खुदा ना खास्ता कोई जिस्म में गिल्टी मौजूद है या कोई बुखार आ रहा है, क्या चीज़ है, और अगर ऐसा हो तो हमें कहाँ जाना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए। लाइफ इज़ शॉर्ट एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंजॉय एम्ब्रेस whatever comes in your way. ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और इसको इंजॉय करना चाहिए। आपकी ज़िंदगी जैसे भी गुजरी हो, जो भी हमारे साथ वाक़यात होते हैं, whether it is a challenging or a great day, just welcome it with open arms. No matter who you are, you can't escape challenges. They are part of our lives. ज़िंदगी में कोई भी चैलेंज आ जाए, कोई भी मसला हो जाए, खुशी आए, गम आए, हमें इसको एक्सेप्ट करना ही होता है। ये ज़िंदगी के चैलेंजेस हैं। तो इसके साथ ही मैं आज का जो अपना फ्लोर है, माइक है, आई वुड लव टू इनवाइट डोरस ऑर्टिज. शी इज़ ऑल्सो आवर डायरेक्टर and let me explain. I always tell, behind my success, behind our American Council of Minority Success, there is two women. One woman is not here, Jackie Bond, she's on vacation, and one is Doris Ortiz. So big hands for Doris Ortiz. I am here, my organization is here because of her. So I would love to hand over the mic to Doris Ortiz because she's going to fulfill her responsibilities, and we are very lucky because she is also our board director.
तो हमारी जो कामयाबी है आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिस मुकाम पे है उसके पीछे इनका बहुत हाथ है। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और किसी औरत का पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी में आपको मालूम है कि कोई अकेली औरत को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है हमारी, लेकिन इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और ऑर्गेनाइजेशन को भी। और जब ये रिटायर्ड हुई तो हमारी बोर्ड की डायरेक्टर भी हैं। सो नाउ डोरस ऑर्टिज। Thank you very much. Assalamu alaikum to everyone. I'm happy that you all were able to make it. This is a very, very important issue for women in your particular community as well as all communities. But we're so happy that you decided to show up, and we're so grateful to Maimonides Hospital for providing this and providing these wonderful doctors to educate you a little bit on what you should and should not look for. Thank you to Mr. And I'm going to look for names because just one second, because I want to thank Eric Frasco from Maimonides Hospital, who has helped us put all of this together and has been very, very helpful in bringing this program to you. And my job is to introduce first, before I introduce the doctors who are going to make the presentation, I want to welcome. There are so many of you here, and if I leave you out, please forgive me. I'm going by a list that I got, and I'm going to look at the list now. We have in the audience Rodney Bichot, who was just designated as the Democratic Assembly nominee, and I know Rodney a long time, and Rodney's, I'm sorry, a long time, and we welcome you here, and thank you so much. We also have Baber Munir from the United Healthcare. Yes, Dr. Ahmed, okay. Dr. Kayane Hanna is also here. I introduced Dr. Ahmed already. So, and we welcome all of you here. We're just so happy that all of you are here. Oh, also we have from the Bridge Project, Mr. Mark Mayer Appel. So, welcome, Mark. With that being said, I'd like to introduce I just introduced Mr. Frasco to you, and so I'm going to give the microphone over to him so that he can just give you a little summary of what's going to take place and introduce the doctors for you. Thank you. This is going to be a very beneficial lecture for everyone. On the schedule, we have Dr. Manasseh, who will be our first speaker. She's going to talk about different types of self-examination and different procedures that Maimonides Hospital has to offer. Followed by Dr. Ayala, who is going to be talking about radiology, different types of mammograms, and I think we're ready. आप लोगों की आमद का शुक्रिया है। ये दो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर मनेसा एंड डॉक्टर अयाला। डॉक्टर मनेसा आपको कुछ ब्रेस्ट कैंसर की टाइप्स बताएंगी और ये बताएंगी कि आप अपना खुद से मुआयना कर सकती हैं, घर बैठ के भी खुद से अपने आप को चेक कर सकती हैं किस तरीके से, और अगर आपको शुरू में कुछ फील होता है तो किस तरह आप अपने आप को देख सकती हैं। और डॉक्टर जो हैं वो बताएंगे कि मैमोग्राम्स की क्या टाइप्स हैं और मैमोग्राम के दौरान अगर आप मैमोग्राम कराती हैं तो किस तरह ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है। So, over to you, Doctor. I want to thank you for the opportunity to present to you today. We're going to talk a little bit about breast health and what's needed to maintain breast health and what we should do if we find something that's a problem. ब्रेस्ट हेल्थ के बारे में आज डिस्कशन करेंगे और ये बताएंगे कि ब्रेस्ट हेल्थ आप किस तरह अपने घर में रह के भी मेंटेन कर सकते हैं। So we look at the breast, we look at the anatomy of the breast, and it consists of more than what most people think. There are the lobules that make milk, and the lobules then send the milk from the lobules down through the duct, out through the nipple. It's within these areas that breast cancer can actually develop. ये ब्रेस्ट की एनाटमी है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर है। इसमें लॉब्यूल्स होते हैं जो कि मिल्क प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और ये मिल्क डक्ट्स के ज़रिए निपल तक पहुंचता है, और यही वो जगह है जहां पे कैंसर बन सकता है किसी भी वक्त पे।
We also talk about the lymph nodes under the arm, in the axillary region, we call it, because these are the areas that cancer, infection, anything abnormal in the breast can drain to. So sometimes we may find some abnormalities there first before we see it in the breast. एक्जिला या के बगल जिसको कहते हैं, कभी कभार आपका जो कैंसर होता है उसके सेल्स वहाँ पहुँचते हैं और कभी कभार आपको वहाँ स्वेलिंग या गिल्टी महसूस होती है, जो कि ये इंडिकेट कर रही है कि आपके ब्रेस्ट में कोई एबनॉर्मलिटी पैदा हो रही है. So when we talk about breast cancer, we first have to think about what does a normal cell look like. And when you take one of those ducts or channels that I mentioned and you cut it in half and look down the end of it, you'd see something that looks similar to this. All the cells are lining this duct, and as you can see, they all look about the same, and they all are right next to each other, behaving themselves. ये एक नॉर्मल सेल है जो बिल्कुल उसको नीचे की तरफ से काटा गया है और बिल्कुल आपको इनिशियल स्टेज पे एक सेल की लाइन नजर आ रही है जिसने एक सेल को सराउंड किया हुआ है. When a cancer develops, one of these cells change. And when this change happens, this cell looks different from the other cells and starts to act differently than a normal breast cell. It actually overgrows its space and learns how to leave the duct and go elsewhere. अगर किसी सेल में ये कैंसर पैदा होना शुरू होता है तो ये कैंसर अपनी साख बदल लेते हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और बल्कि तेज़ी से बढ़ के बाहर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और एक दूसरी जगह पे पलना शुरू हो जाते हैं. So how do we find it? Our hope is to find this, which Dr. Aliella will go into, before we can feel these areas. But sometimes these changes can show up before you have a chance to get your imaging. So we look at your history, your exam, look at imaging as well, and if necessary, we do a biopsy. इससे पहले कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हो, अगर आप तरीके से हिस्ट्री आपका मुआयना किया जाए, आपकी अल्ट्रासाउंड किया जाए, आपके एक्सरेज लिए जाएं, आपकी इमेजिंग की जाए और अगर कोई चीज़ उसमें ख़राब निकलती है उसकी बायोप्सी की जाए. बायोप्सी एक प्रोसीजर होता है जिसमें आप छोटा सा सेल बाहर लेते हैं और उसको फिर लैब भेज के उसको देखते हैं कि आया ये कैंसरस सेल है या नहीं, उसको बायोप्सी कहते हैं. With respect to history, it really comes down to any change that is different than what you're used to seeing. That can include a breast mass, if there's pain in a particular spot, although most times, thankfully, pain is normal. If there's any changes to the way the skin looks, especially if it looks red, if there's any fluid coming from the nipple, if there's any changes that we note that do not occur with the menstrual cycle, as well as any family history that we might have or any past history of breast cancer. Anything that looks different from your baseline should raise an alarm. ब्रेस्ट में कोई भी गुठली या कोई भी जैसे लंप कहते हैं, कोई भी गुठली उसमें दर्द हो या दर्द ना भी हो, ऐसे कोई भी स्किन चेंज यानी कि लाल हो रही हो उसके ऊपर स्किन, अगर निपल से डिस्चार्ज आ रहा हो, अगर आपकी कोई भी ऐसी चेंज जो आपकी पीरियड्स के अलावा हो रही हो, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में, अगर आपकी फैमिली में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी सिस्टर, आपकी मदर को कोई हिस्ट्री हो जिनको कैंसर हो चुका हो या आपको ही पहले कोई कैंसर की शिकायत रही हो, अगर इस तरीके से ये हिस्ट्री अगर आपकी बनती है तो इट मीन्स कि आपकी कैंसर की स्क्रीनिंग होनी चाहिए. Similarly, when we look at the examination, we also look for changes. Both breasts usually look about the same. Some people can have a little bigger size than the other. That's normal. But if something has changed from what you're used to seeing, we get concerned. So if you feel a little thickening in an area, you don't feel it on the other side, if you feel a lump under the arm, or if you feel a lump anywhere on the neck, or if the nipple itself looks like it's different, if it's come in or pulled in when it's usually out, as well as if any kind of actual masses are felt in the breast. वैसे तो दोनों ब्रेस्ट साइज और दिखने में सेम होते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि दोनों ब्रेस्ट में कोई फ़र्क पैदा हो रहा है, उसकी स्किन कोई डिफरेंट हो रही है एक दूसरे से, अगर निपल में से कोई डिस्चार्ज हो रहा है या निपल की शक्ल तब्दील हो रही है या आपको कोई गिल्टी महसूस हो रही है, अगर आपकी बगल में या एक्जिला में कोई गिल्टी महसूस हो रही है, अगर आपको नेक में कोई गिल्टी महसूस हो रही है, इसको चेक करना ज़रूरी है.
Screening is a way to try to find an abnormality before it gets to the point where we actually see changes in the breast. So a lot of women will ask, I feel fine. Even though you feel okay, these areas can develop in the breast and become a problem. So we need to understand the disease and understand why we do the imaging to find this disease as early as possible. स्क्रीनिंग का मकसद होता है कि डिजीज को बढ़ने से पहले ही पकड़ लिया जाए। बाज़ दफ़ा आप कहते हैं कि मैं टेस्ट क्यों करवाऊं, मैं तो ठीक हूं, मैं क्यों अपना टेस्ट कराऊं, मैं क्यों अपना मैमोग्राम कराऊं। लेकिन असल बात यही है कि पैदा होने से पहले अगर कोई छोटी चीज़ है जो बड़े होने से हम बचा सकते हैं, उसके लिए हम स्क्रीनिंग करते हैं। Some of the radiology imaging that Dr. Ayala will go through in more detail includes a regular screening mammogram, as well as what's called a diagnostic mammogram to look if there is a particular problem. We also look at ultrasounds, which is a machine that uses sound waves and can tell if something is solid or cystic, fluid-filled, as well as using a more advanced machine called an MRI. We sometimes will use an MRI, particularly in a woman who's had a history of breast cancer herself, or if there's a very strong family history. But in the end, if there's anything that's on your exam that we are concerned about, even if your imaging is negative, we still need to investigate to make sure there isn't a problem. स्क्रीनिंग में मैमोग्राफी सबसे पहले आती है। यूजुअल मैमोग्राफी 40 इयर्स एज से शुरू होती है। एवरेज रिस्क अगर आपको है उसमें भी मैमोग्राम कराया जाता है। इसको कहते हैं डायग्नोस्टिक मैमोग्रामी। अगर कोई मैमोग्राफी, अगर कोई एबनॉर्मल स्क्रीनिंग है, अगर कोई आपको गिल्टी महसूस हो रही है, उसमें आपको मैमोग्राम कराया जाएगा। अल्ट्रासाउंड से भी किसी किस्म की गिल्टी को डायग्नोस किया जा सकता है। गिल्टी में अगर पानी भरा हुआ है, अगर वो सिस्ट है, और या फिर वो अगर कैंसर का सॉलिड गिल्टी है, तो भी इन दोनों में डिफरेंस पता चल सकता है अल्ट्रासाउंड से। एमआरआई से भी मदद ली जा सकती है। अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपकी वालदा या आपकी बहनों में से या आपकी फैमिली में किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ है या आपको इस तरह की पहले की तकलीफ रही है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एडवांस टेस्टिंग कराएं और उसमें बायोप्सी भी शामिल है। If we find something abnormal in the imaging, the first thing we do is we take a sample of it. And this is used to be done in the operating room, but today we do not do that. We usually will actually do it with a small needle that takes a sample. And the reason we do that is because sometimes if the sample is completely negative, it's completely fine, it saves us from going to the operating room. बायोप्सी का प्रोसीजर पहले ऑपरेशन थिएटर में किया जाता था, लेकिन अब मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी की बदौलत अब ये बहुत छोटा सा प्रोसीजर है। एक छोटी सी फाइन नीडल आपके ब्रेस्ट में डाली जाती है और एक छोटा सा सेल का सैंपल लिया जाता है, इसको लैब भेजा जाता है ताकि आपका पता लगा सकें कि ये वाकई ही ब्रेस्ट कैंसर है या कोई कोई खतरनाक सूरत हाल है या कोई खतरनाक सूरत हाल नहीं भी है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि नेगेटिव टेस्ट आते हैं, इट मीन्स कि आपको कोई खतरनाक बीमारी नहीं है और फर्दर आप ऑपरेशन या किसी भी सर्जरी से महफूज हैं। Based on the results of the biopsy, if it does come back that there is malignant or cancerous disease, that's where surgery has a role. अगर बायोप्सी पॉजिटिव है और ये शो करती है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है, तो फिर सर्जरी का मौका आता है। Surgery today is very different than in the past. A lot of the fear associated with a breast cancer diagnosis is a woman feels that she may be disfigured by what we do. Thankfully, we don't do that type of surgery as much today anymore. Most women, we actually are able to just remove the area of the cancer and still preserve the way the breast looks. If we do have to remove the breast, it is because we feel the treatment requires that more tissue than is usually needed to save the breast is needed to be removed. In those cases, we do have wonderful reconstructive options that are much better than in the past. पहले सर्जरी के बारे में खौफ पैदा होता था कि अगर आपकी सर्जरी है तो आपका ब्रेस्ट काट दिया जाएगा और आप डिसफिगर हो जाओगे, लेकिन अब मॉडर्न सर्जरी की वजह से सिर्फ लंप या गुठली निकाली जाती है, उसके सराउंडिंग में जो खतरनाक किस्म के सेल्स हैं वो निकाले जाते हैं और बाकी का ब्रेस्ट छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर आपको आपकी बीमारी फैल चुकी है और आपका पूरा का पूरा ब्रेस्ट रिमूव करना भी पड़ता है आपको बचाने के लिए, तो उसके बाद रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज यानी कि प्लास्टिक सर्जरीज और दूसरी सर्जरीज हैं जिनसे आपका फिगर दोबारा लाया जा सकता है। When you decide to get your breast health taken care of,
The most important thing is not just to get a mammogram anywhere. You want to be able to go to a place that has an actual team that can handle if we happen to find something that's abnormal, as well as a team that will follow and keep an eye on what needs to be taken care of. So breast health today is not just about one particular physician or specialty. It actually requires a team. किसी भी जगह से मैमोग्राम करा लेना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको एक पूरी टीम चाहिए होती है कि अगर आपका मैमोग्राम ठीक नहीं है तो वो टीम आपके मैमोग्राम का जायजा ले, आपको डायग्नोसिस करे और आपका ट्रीटमेंट प्लान करे. It also requires very sophisticated technology. Thankfully, we've developed increasing technologies that help us to find this disease as early as possible before it's something that we can feel on an exam. टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत पहले ही डायग्नोज कर ली जाती हैं ये ख़तरनाक बीमारियां, इससे पहले कि कुछ एग्जामिनेशन में फील किया जाए. ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है इस वक्त कि अगर छोटी से छोटी गिल्टी आपके ब्रेस्ट में मौजूद है तो वो इसको डिटेक्ट करेगी और बायोप्सी के ज़रिए पता चल सकेगा कि ये ख़तरनाक वाली गिल्टी है या नहीं. Also, there are a number of other therapeutic options increasing every year so that this becomes a disease that we can easily treat and have many options for. साल भर साल हर वक्त रिसर्च चलती रहती है और नए से नए ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद रहते हैं और हर साल एक नए रिसर्च और नए ट्रीटमेंट की वजह से इसका ट्रीटमेंट आसान होता जा रहा है और ज़िंदगी आसान हो रही है. So why choose the Maimonides Breast Center? The number one reason, and I'll tell you, I drive about 2 hours a day from Connecticut to get there, but another reason is that the technology we have, there isn't a single piece of technology, including, and Dr. Ayala will go through many of that, 3D mammography that we do not have to analyze the breast. डॉक्टर कनेटिकट से 2 घंटे ड्राइव करके मेमोनिडीज हॉस्पिटल पहुंचती हैं क्योंकि इनका ख्याल है कि मेमोनिडीज सेंटर बहुत ही बेहतरीन सेंटर है क्योंकि इसमें नई टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है 3 डायमेंशनल स्क्रीनिंग, जिससे हर तरीके से हर एंगल से ब्रेस्ट को विजुअलाइज किया जा सकता है. We also have a team that has been awarded by several institutions. Our breast imaging center is an imaging center of excellence. It was the first in Brooklyn to be awarded with that designation. मेमोनिडीज हॉस्पिटल को एक्सीलेंस अवार्ड मिला है जो कि ब्रुकलिन का पहला हॉस्पिटल है जिसको इस ब्रेस्ट हेल्थ में ब्रेस्ट सेंटर ऑफ इमेजिंग को एक्सीलेंस अवार्ड मिला. We also were awarded and still are the only breast center to be accredited by the American College of Surgeons as a national accredited program for breast centers, passing 100% of its standards. इनको नेशनल एक्रेडिटेशन प्रोग्राम से भी मेमोनिडीज हॉस्पिटल को ये एजाज़ मिला है कि ये कॉलेज ऑफ सर्जन्स के साथ अटैच हुए हैं और इनको ये सर्टिफिकेट मिला है कि इनकी बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से इनको ये सर्टिफिकेट दिया गया है. We also have designed our center in a way to provide a healing environment. It is not typical of this regular clinical setting. There are water features, plant features that we feel help with the healing process by providing an environment of peace. ये सिर्फ एक क्लिनिक या हॉस्पिटल का माहौल नहीं है इनके सेंटर में इन्होंने दरख्त, पौधे और पानी और मुख्तलिफ चीज़ों से एक ऐसा माहौल बनाया है जिससे हीलिंग या आपकी रिकवरी ज़्यादा बेहतर हो सकती है और आप रिलैक्स फील करते हैं. एक हॉस्पिटल के माहौल में आप डिप्रेसिव और डिप्रेशन फील करेंगे, लेकिन इनके माहौल में एक अच्छा माहौल है जिससे हीलिंग में आसानी होगी. We have also learned to cater to the multi different nationalities. We now have a program that was officially awarded by the Komen Foundation for our Arabic and Muslim population, where we have 2 liaisons that are Muslim speaking and help take our women through the process to make this as comfortable as possible. इन लोगों ने मुस्लिम अरबिक कम्युनिटी की वजह से मुसलमान डॉक्टर्स हायर किए हैं जो मुसलमान ख़वातीन को उस प्रोसेस से गुजारते हैं जिसमें स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट मौजूद होता है ताकि आप लोग आसानी से उसको कर सकें, क्योंकि झिझक होती है मुसलमान ख़वातीन को ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स के लिए, तो इन्होंने मुसलमान डॉक्टर्स हायर किए हैं जिससे आपको आसानी होगी. And if it's very important to ourselves to make sure we take care of ourselves, because without you, your families cannot develop and grow. You are a very important part to your family. You may feel that you need to do this or that and you haven't got time,
But remember, if this disease happens, God forbid, to capture you, you won't be there for the little ones. आपके दम से ही आपके ख़ानदान की रौनक है, आपके दम से ही आपकी फैमिली है, आप लोग घर की मसरूफियात में मसरूफ़ रहती हैं, लेकिन आपको अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप स्क्रीनिंग करें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना खुद का मुआयना करें ताकि आप हेल्दी रहें और आपकी फैमिली भी हेल्दी। And finally, it is my wish that this information we provide you today brings you peace, takes away your fear, and inshallah. उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन जो आज आपको मिली है इससे आप कुछ फ़ायदा उठाएंगे और घर कोई आप अच्छा मैसेज लेके जाएंगे कि अपने आप को चेक करें और अपने आप को हेल्दी रखें। थैंक यू। Good evening, everybody. Thank you very much for having us this evening. I'm Dr. Eric Ayala, breast radiologist at Maimonides Cancer Center, and it's an honor to be with you tonight. I will explain to you the role of medical imaging in the early detection and treatment of breast cancer. डॉक्टर आपको इमेजिंग के बारे में बताएंगे कि अगर आप एक्सरेज कराते हैं, अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उससे किस तरह अर्ली डिटेक्शन हो सकती है, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन ही अच्छे ट्रीटमेंट को जन्म देगी। So, my role as a breast imager is to detect cancer at a very early stage. At the stage where there are no symptoms, you may be feeling all right, there is no lumps, there is no pain. Even if you go to see your primary care doctor after a physical exam, everything seems fine. That doesn't mean that an early cancer is not present. That's why screening is very important. बाज़ औक़ात आप बिल्कुल ठीक फील कर रहे होते हैं, आप अपने डॉक्टर के पास भी जाते हैं, वो आपका मुआयना करते हैं और आप समझते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, आपको कोई गिल्टी नहीं है, आपको कहीं भी स्वेलिंग नहीं है, लेकिन स्टिल कोई नन्हा मुन्ना सा सेल जो कि एबनॉर्मल सेल है आपके ब्रेस्ट में मौजूद हो सकता है, जिसके लिए इमेजिंग बहुत ज़रूरी है। And why is early detection so important? Well, if you want to have the best treatment options and of course increase the chance of successful treatment and survival, it is very important to find breast cancer at a very early stage. ब्रेस्ट कैंसर अगर अर्ली स्टेज पे पकड़ लिया जाए तो आपके लिए बेहतरीन ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं और वो ट्रीटमेंट ऑप्शंस से लेकर आप बिल्कुल एक नॉर्मल ज़िंदगी वापस गुजार सकते हैं। As a breast radiologist, the main line of screening that I could offer you is an annual mammogram. Annual mammogram, starting at age 40, is nowadays the recommendation for early detection of breast cancer. 40 साल की उम्र के बाद साल में एक दफ़ा मैमोग्राम कराना बहुत ज़रूरी है। ये एक रिकमेंडेशन है ताकि अगर कोई अर्ली साइन आपके ब्रेस्ट में है या आपको मालूम नहीं है या अभी वो कोई सिम्टम नहीं दे रहा, लेकिन स्टिल अगर आप साल में एक दफ़ा मैमोग्राम करा रहे हैं तो वो अर्ली से अर्ली डिटेक्ट हो सकता है। At Maimonides Cancer Center, we offer screening mammograms. We offer ultrasound, which can also be as a screening tool or as a diagnostic tool. And as Dr. Manasseh mentioned, we can also offer you breast MRI. Basically, these are the three techniques that we use for diagnosis of breast cancer. मेमोनिडीज ब्रेस्ट सेंटर में मैमोग्राम्स, अल्ट्रासाउंड और एमआरआई तीनों टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं जिनसे आपको स्क्रीनिंग भी हो सकती है और उनसे आपको डायग्नोसिस भी हो सकती है। अगर आप स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं 40 इयर्स के बाद और कुछ नहीं निकलता, इट्स ओके, ठीक है। अगर आप हर साल 40 साल के बाद करा रहे हैं और आप ठीक हैं तो इट्स ओके, लेकिन अगर आपको कोई बहुत ही छोटी चीज़ पैदा हो रही है तो वो बहुत ही अर्ली डिटेक्ट हो सकती है अगर आप एनुअल स्क्रीनिंग करा रहे हैं तो।